Students, class 9th, we are going to discuss the history chapter 2, the Russian Revolution. We are going to discuss, first part is already over, so this is the part 2 of the Russian Revolution. So early socialist thinkers. Robert Owen was also one socialist thinker. 1771 to 1858 his lifetime, and a leading English manufacturer, believed in the idea of cooperatives. His idea was about cooperatives, and he sought to build a cooperative community called New Harmony in Indiana, USA. So he started one new cooperative community society where people together give and collect some money and started business, and the profit they were divided among themselves. What were the profit, जितना भी लाभ आ रहा था वो सबको अपना मेंबर के अंदर उसको सब डिवाइड करके शेयर करके ले रहे थे. सो दैट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी. सो रॉबर्ट ओवेन was a leading English manufacturer, means one manufacturer means those manufacture the things, those means make the things by some factories, or the factory owner you can say. Manufacturer means, so that his idea was about cooperative, to make cooperative society. He made a New Harmony in Indiana, one cooperative society. Louis Blanc, he is another French thinker and wanted the government to encourage cooperatives. He also encouraged cooperative system. Cooperation means, all of you understood, no? Cooperate करके कोई चीज़ बनाना means people will cooperate to each other. They will collect some money. They will start one new enterprise, and whatever the profit will come, वो profit को share करके ले लेंगे. So the government encourage cooperatives and the replace capitalist enterprises. और जितने कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेस था सबको रिप्लेस करने का कोशिश किए. तो जैसे कैपिटलिस्ट मीन्स अंडरस्टूड, नो? दोज आर रिच पीपल, दोज आर एरिस्टोक्रेट पीपल, दे वर अ कैपिटलिस्ट. ओके, वो कैपिटलिस्ट कहा जाते थे. और दीज कोऑपरेटिव्स वर द एसोसिएशन ऑफ पीपल हु प्रोड्यूस्ड गुड्स टुगेदर and divide the profits according to the work done by the members. So cooperatives were the association, और ये एसोसिएशन है ऑफ पीपल इकट्ठे होकर एसोसिएट करके एक दूसरे से कोई मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, हाँ, कुछ भी बनाते हैं, कुछ भी प्रोड्यूस करते हैं सामान, तो उसको जो प्रॉफिट आता है उसको शेयर करके अपने के अंदर सब they share the things, they share the profits, they divide the profits according to the work done by the members. So members के बीच में जितने भी प्रॉफिट आता है सबको शेयर करके लेते थे. So Louis Blanc, ये फ्रेंच थिंकर, wanted the government to encourage cooperatives. So he wanted that government should encourage cooperative society. Now next, Karl Marx. He also another socialist, believed that to free themselves from capitalist exploitation. वो भी डिमांड कर रहे थे कि we should free from capitalist exploitation, and workers had to construct radically. Workers had to construct, workers को बहुत मतलब चेंजेस लाना पड़ेगा, तो वर्कर्स का भी चेंजेस लाना पड़ेगा. द सोशलिस्ट सोसाइटी वेयर ऑल प्रॉपर्टी आर सोशली कंट्रोल्ड. सोशलिस्ट सोसाइटी मीन्स वेयर प्रॉपर्टी विल बी कंट्रोल्ड बाय द सोसाइटी and government will not interfere in that, and whatever the property, that property will be
ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी का हो जाएगा प्रॉपर्टी। सो दिस वुड बी ए कम्युनिस्ट सोसाइटी, ये एक कम्युनिस्ट सोसाइटी बन जाएगा। किसी के पास ज़्यादा स्टोर होके प्रॉपर्टी नहीं रहेगा। किसी के सपोज किसी के पास एक बहुत बड़ा बंगला है, तो उसमें से फैमिली मेंबर्स कितने हैं, 3 लोग हैं। सपोज 3 लोग हैं तो उनको बहुत बड़ा बंगला है, तो उसको क्या किया जाता था कि सोशलिस्ट कम्युनिस्ट सोसाइटी मीन्स दैट बंगलो शुड बी ऑफ सोसाइटी, ये सोसाइटी का हो जाएगा बंगलो। और उसमें बस 3 लोग के लिए रहने के लिए जितना भी उनको घर चाहिए उतना उनको दिया जाएगा। बाकी सब जितने भी उनका बंगलो के प्लेस खाली है, सब जिसके पास घर नहीं है, जो लोग गरीब है, उनको डोनेट किया जाएगा कि वो लोग वहाँ पे आके आराम से रहे। सो नो मीन सोसाइटी में रिच पुअर ये सब क्लास नहीं रहेगा। अंडरस्टूड। सो रिच पुअर ऑल आर इक्वल, और इक्वालिटी एस्टैब्लिश करने का ये कोशिश है। सपोर्ट फॉर सोशलिज्म इन यूरोप में और सोशलिज्म को कैसे कैसे सपोर्ट मिला। सो सोशलिस्ट आइडिया स्प्रेड थ्रू यूरोप, पूरा सोशलिस्ट आइडिया स्प्रेड ओवर यूरोप में इसका सोशलिस्ट आइडिया स्प्रेड कर गया। और वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी began forming association to fight for better living and working condition। सो जितने भी वर्कर्स थे इंग्लैंड और जर्मनी के, डिफरेंट कंपनी वर्कर्स, फैक्ट्री वर्कर्स, दे फॉर्म्ड एसोसिएशन, सोसाइटी बनाए, एसोसिएशन बनाए टू फाइट फॉर बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन, बहुत अच्छा लिविंग कंडीशन के लिए और सोसाइटी में अपना बेटर लिविंग कंडीशन और वर्किंग कंडीशन के लिए वो लोग सोसाइटी बनाए और एसोसिएशन बनाए। एग्जाम्पल फॉर एसोसिएशंस इन यूरोप लाइक सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी SPD in Germany, Labour Party in Britain, Socialist Party in France। So all these parties formed by the people throughout the Europe, मीन्स जर्मनी में SPD बना, ब्रिटेन में लेबर पार्टी, फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी। कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स, they applied the dialectic of Hegel to the development of the society। They were joint authors of the Communist Manifesto। They were the communist writers and communist socialist workers। They were the authors also, means they were story writing, and they were the communist they are the joint authors of the Communist Manifesto। कम्युनिस्ट मैनिफेस्ट का ये लोग ऑथर्स थे, राइटर थे। इंडस्ट्रियल वर्कर्स, by the end of the 19th century Russia had experienced a rapid industrial growth। so by the 18th means 801 से लेकर फुल 1900 तक, by the end of the 19th century, so Russia had experienced, end of the 19th century means near about 1900, so Russia had experienced a rapid industrial growth। In Russia there were rapid industries, industrial growth means many industries grew at that time at the end of the 19th century। so isolated industrial centers, mainly St. Petersburg capital and Moscow, in capital St. Petersburg area, in Moscow area, industrial centers formed, means some industries grew up। Trade unions were illegal। so which are trade unions, they became illegal। उनको अभी मान्यता नहीं मिल रहा था कि ट्रेड यूनियन कहीं पे कोई सामान ला के बेच दिया, तो दे वर इलीगल। सो वर्कर्स लिव्ड अंडर हार्श कंडीशंस, बट वर्कर्स वर लिविंग in harsh conditions, means very bad conditions। so factory workers, industrial workers were in very bad condition, very उनका living condition बहुत पुअर था। circumstances leading up to the revolution,
So before 1917, the ancient Russian Empire was under the rule of Tsars. So before 1917, इन रसिया देवर जारिस्ट शासन था, जारिस्ट रूल कर रहे थे. देवर ऑटोक्रेटिक एंड रिप्रेसिव, वेरी ऑटोक्रेटिक रूलर्स थे और वेरी रिप्रेसिव रूलर, लोग को अप्रेस करके रख रहे थे. सिंस 1613 व्हेन द रोमानव डायनेस्टी बिगन. सो फ्रॉम 1613 they are ruling over Russia, and they up to 1917 the oppressive ruler Tsarist rule was there. They were autocratic rulers. And Nicholas II autocracy. Nicholas II autocracy means that Nicholas II also one autocratic ruler, and among autocratic ruler peasants, government, revolutionaries, how they were, their condition of peasants means किसान, गवर्नमेंट, हाँ जो गवर्नमेंट रूल कर रहा था, और रिवोल्यूशनरीज. सो peasants were very poor under Nicholas, and installation for land, 49 payments, life was very harsh, means their installations for land, वो लैंड इंस्टॉलेशन उनको हो रहा था और वेरी पुअर कंडीशन था, पेमेंट बहुत कम था, हार्श कंडीशंस, फैमिली ब्रोक आउट ऑफन एंड लाइफ वाज शॉर्ट. वहाँ पे लोगों का कंडीशन बहुत ही बुरा था और फैमिली ब्रोक आउट बीच बीच में ड्यू टू वेरी लेस रेन. फैमिली ब्रोक आउट मीन्स अनाहार, हाँ गरीबी, ये सब था. लाइफ वॉज वेरी शॉर्ट मीन्स वो किसान का लाइफ तो बहुत शॉर्ट था, बहुत कम दिन के लिए उनका लाइफ चल रहा था और बहुत डेथ बहुत जल्दी आ जाता था ड्यू टू देयर बैड लिविंग कंडीशन. गवर्नमेंट, व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट वॉज देयर, हैड टू ओबे निकोलस. जो भी गवर्नमेंट था, जो भी मिनिस्ट्री था, तो निकोलस को मानना इनका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट काम था. So no one can disagree with him or they would be fired. हाँ, कोई भी गवर्नमेंट का एनी मेंबर, एनी मिनिस्टर, they will not disobey Nicholas. If they will disobey, then they would be fired. उनको गोली से उड़ा दिया जाएगा. Caused terrorists to target officials, get rid of autocracy. हाँ, that is, so government caused terrorists to target officials and get rid of autocracy. So they caused terrorist, ये सब शासन, टेररिस्ट शासन क्रिएट किया. टू टारगेट ऑफिशियल्स, ऑफिशियल्स का टारगेट किया जा रहा था. इफ़ दे आर नॉट वर्किंग हार्ड देन गेट रिड ऑफ ऑटोक्रेसी. एंड ऑटोक्रेसी से हटने के लिए जो भी कोशिश कर रहा था तो उसको पनिशमेंट दिया जाता था. और रिवोल्यूशनरीज hated the government. Revolutionaries at that time, they hated the government. Many parties were created, different parties were made, want to get rid of autocracy. They wanted to overthrow the autocracy. autocracy को हटाना चाह रहे थे. Killed many government officials. many government official को मार दे रहे थे, जान से ख़त्म कर दे रहे थे. and plotted to assassinate the Tsar. And sometimes they started planning to kill Tsar Nicholas also. Russian Empire politics. So Russian Empire politics was which type? So Russian Empire photo you are looking, Tsar Nicholas and his wife, the queen of Nicholas. So autocracy, the Tsar had almost absolute power and believed in the divine right of kings. Always autocracy ऐसा था कि the Tsar had almost absolute power. He had the full power and he believed in the divine right of kings. So kings का, राजा का शासन बहुत means divine right of kings means ये गॉड के साथ बराबर है. हाँ, सो राजा का शासन भगवान के शासन के सहित
बराबर है. सो एंड बिलीव्ड इन द डिवाइन राइट ऑफ किंग्स. सो किंग्स के पास डिवाइन राइट है. हाँ, भगवान का दिया हुआ राइट है कि वो रूल कर सके. और व्हाट एवर ही थिंक्स द किंग वॉज थिंकिंग दैट वॉज द लॉ. एंड रेजिस्टेंस इन रशिया वॉज लिमिटेड as most peasants and workers were deeply religious and loyal to the Tsar. So resistance in Russia was limited. Nobody was resist the king, the autocracy of the Tsar. So कोई भी resist कर नहीं रहा था, कोई oppose नहीं कर रहा था. And most peasants and workers were deeply religious. बहुत peasants और workers वो religious थे, धार्मिक थे. एंड लॉयल टू द जार. वो पूरा फुल होल हार्टेडली जार निकोलस को बिलीव कर रहे थे. और नो अपोजिशन वाज देयर, नो रेजिस्टेंस वाज देयर फ्रॉम द पीजेंट्स एंड द वर्कर साइड. नेक्स्ट, रशियन एम्पायर. इट इंक्लूडेड द टेरिटोरी अराउंड मॉस्को, द प्रेजेंट डे फिनलैंड, लैटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पार्ट्स ऑफ पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस, Central Asian states, Georgia, Armenia and Azerbaijan. So these are the Russian Empire. These states were in the Russian Empire. These states were in the Russian Empire. It included the territory around Moscow. So Moscow around territory में जितने भी states था, they are included to the Russian Empire. And this is the year of 1914 we are discussing. So religion, the majority religion was Russian Orthodox Christianity, and it included Catholics, Protestants, Muslims and Buddhists. So majority religion was Russian Orthodox Christianity. Mostly people were very old Christians, means Orthodox Christianity means old Christian religion, and they were very Orthodox Christianity. They were adopted the Christian religion but old method, old system of Christianity. And it included Catholics. Catholics means those are new Christians, and Protestants. Some were Protestants, some were Muslims and Buddhists. Some Muslims and some Buddhists were also there. Different religions were there. Economy. Majority of Russia's people were agriculturists. Mostly Russia's people were agriculturists. About 85% people of Russia were educationized. And the cultivators produced for their own needs, for the market and for export. So cultivators were produced means maximum. They keep their own needs, जितना उनको चाहिए वो रख देते थे, for the market and for export. And after that they were producing for market, they were selling the things for market, and they were also exporting the things. Industry was found in pockets. Very less industries were there. Found in pockets means very less number of industries were there in Russia. Both small and large factories existed. Large scale, small scale industries were there. Factories were there. A railway network extended. Railway network को बहुत ज़्यादा प्राधान्य दिया गया because railways, when factories established, no, so railways would be there because to bring the raw materials, कच्चा माल लेने के लिए, to bring the raw materials and to supply the produced things. फैक्ट्री और इंडस्ट्री में जितना भी थिंग्स का सप्लाई हुआ सबको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए थ्रू आउट द कंट्री रेलवे नेटवर्क्स आर very much essential. So foreign investment in industry increased. Forest investment also in industry increased. Many foreign people invested for industry at that time. Coal production doubled and iron and steel production quadrupled. So coal production double हो गया था, iron and steel production also
4 टाइम्स बढ़ गया था। मोस्ट इंडस्ट्रीज बिलोंग टू कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट पीपुल, दोज आर वेरी रिच पीपुल, they were forming industries, they were establishing industries because they have money, so they were establishing industries. Government supervised large factories but no use. Government supervised very large factories but no use means कोई मतलब कोई वैल्यू नहीं था उसका. So the working hour was 15 hours and accommodation was not enough. So working hour of people were 15 hours means maximum, 24 hours to total day time, and 15 hours they were working, and their accommodation, their houses were not enough. बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं था, ना तो sufficient था. Workers were divided by skill. Workers were divided according to their skill. Some were mechanics, some were laborers, some were, so skill wise they were different workers were appointed. The metal workers were paid more, so metal workers were also there, so they were paying more because they are hard working. So women were 31% of the factory labor and were paid less. Women were also working in factory. 31% of women were working in the factories, but they were paid less. They were getting very less salary. The workers started striking against the employers for good working condition and job security. But workers now started striking. वो स्ट्राइक कर दिए थे, आंदोलन स्टार्ट कर दिए अगेंस्ट द एम्प्लॉयर्स. एम्प्लॉयर्स जो फैक्ट्री मालिक था, फैक्ट्री मालिक के अगेंस्ट में वो स्ट्राइक आंदोलन स्टार्ट कर दिए थे फॉर गुड वर्किंग कंडीशन एंड जॉब सिक्योरिटी. उन लोग के लिए वेरी गुड वर्किंग कंडीशन दिया जाए और जॉब सिक्योरिटी दिया जाए, उनका जॉब सिक्योर रहे, उसके लिए वो लोग स्ट्राइक कर दिए थे. द पीजेंट्स कल्टिवेटेड द नोबिलिटी लैंड. पीजेंट्स आर कल्टिवेटिंग द नोबिलिटी मीन्स जमींदार. जमींदार लोग का लैंड को पीजेंट्स कल्टिवेट कर रहे थे. पीजेंट्स किसान खेती कर रहे थे जमींदार लोग से लैंड लेकर. दे वर डीपली रिलीजियस. वो लोग बहुत रिलीजियस थे. सो द पीजेंट्स वांटेड लैंड ऑफ देयर ओन and refused to pay rent and murdered some landlords. Slowly peasants were also became very strict and they refused to pay rent. और वो रेंट देने के लिए, किराया देने के लिए मना कर दिए थे कि we will not pay any more to the landlords and murdered some landlords also. वो जमींदार को मार भी दिए थे. The peasants divided the land according to their family members. So peasants divided the land according to their family members. Suppose 4-5 members are there, so peasants were dividing their land according to the family members. So peasants divided the land according to their family members means peasants को लैंड दिया जा रहा था अपने फैमिली मेंबर्स के हिसाब से. सोसाइटी peasants को कैसे लैंड दिया कि जब उसको जितना फैमिली मेंबर है, सपोज उसके पास बिग फैमिली है, तो उसको कुछ ज़्यादा ही मतलब लैंड मिलेगा. So students, today this much. We'll discuss the another part in next video. Till then, bye bye. See you again.